Welcome to Acharya Vivek Narkade's YouTube channel. Today we will see आदित्य उदय स्तोत्रम. हम आदित्य उदय स्तोत्र आज देखेंगे. आदित्य उदय स्तोत्रम is powerful stotram given by Maharshi Agastya to Sri Ram. The great Agastya says that by adoring Lord Aditya, sun, with this stotra brings victory, success, energy and good health, removes all fear, negativity and anxiety. One is blessed with long life. जिसके भी कुंडली में सूर्य ग्रह अफ्लिक्टेड है या खराब है, उन्हें रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए. लेकिन ये पाठ गायत्री मंत्र के बाद करना चाहिए. गायत्री मंत्र पहले 108 बार जप करें, उसके बाद फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. आइए चलो देखते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र. ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं जागृतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतश्च समागम्य द्रष्टुं व्यागतो रणम् उपागम्य ब्रवीद रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयसि. आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपे नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वपाप प्रणाशनं चिंता शोक प्रशमनं आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मपुरीश तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गवस्तिः. एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदा कालो यमः सोमं रपंपतिः. पितरो वसवः साध्यः अशिनो मरुतो मनुः वायुर्वहिः प्रजाः प्राणः ऋतुगर्ता प्रभाकरः. आदित्यः सविता सूर्यः खगः उषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः. हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मन्तः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्डकुसुमान्. हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निर्गर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः. व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्गयुसामपारगः घनवृष्टिरपं मित्रो विन्ध्यविति प्लवङ्गमः. आतपि मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवद्भवः. नक्षत्रग्रहाणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तुते. नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाग्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः. जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः. नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः. नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः. नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः. ब्रह्मोशानाशुतेशाय सूर्याय दित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः. तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः. तप्तचामीकराभाय
वह्ये विश्वकर्मणे नमस्तोमो विनिज्ञाय रवये लोकसाक्षिणे नाशयत्यस्य वयं भूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठतः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च गतवैश्चव कर्तॄणां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एषिरविः प्रभुः एनमापत्सु पृच्छेषु कान्तरेषु भयेषु च कीर्तयेन पुरुषः कश्चित् नावसीदति राघव पूजयस्वनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयस्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वदिष्यसि एवमुक्ता तदागस्त्यो जगांस यथागतम् एतच्चुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामासु प्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तुं परं हर्षं वाप्तवान् श्रीराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतो भवेत् अथ रविर्निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहस्यमानः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचेश्वरति इति श्री आदित्यहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्।